ये जो वीडियो है ये 8th क्लास के बच्चों के लिए है और इसमें हम इंग्लिश पढ़ेंगे और ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द ब्रूक और ये इस टॉपिक से रिलेटेड पहला वीडियो है। द ब्रूक, ब्रूक का मतलब है एक नदी, छोटी सी नदी या नाला, a small river. So before starting the poem, I would like to read the introduction that's written on the beginning. A brook is not only beautiful to see but also very pleasing to hear. ये जो नदी है ये खाली देखने में खूबसूरत नहीं होते, इट्स नॉट जस्ट ब्यूटीफुल सी बट ये इसकी आवाज़ जो है वो भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि वो भी दिल को वो जो इसकी आवाज़ जो है दिल को खुश करती है एंड दैट्स इसलिए लिखा गया है बट ऑल्सो वेरी प्लीजिंग टू हियर। Its water makes melodious sound as it flows through the woods and valleys. Its water makes melodious sound. Melodious means musical sound. Musical sound is very beautiful to listen, and similar, and that's why it has been written as melodious sound because it's like the musical sound, and the sound of and like the musical sound, the sound of river is also very beautiful, and that's why it's written as melodious sound. Melodious sound means something that's musical, that's very beautiful to listen or to hear. And as it flows through the forests and the valleys, it makes melodious sound. And the brook personified in the narrates the story of the musical journey along these places. So the brook, and it's written, if you can see, personified in the poem. Personified means it's telling its story itself. It narrates its journey itself. Where does it come from? Where does it go? What does it see? And all of this, it's narrating it itself. It has been personified. Imagery of sight and sound are blended in the poem by employing exquisite words and expressions. Uh, Imagery of sight means when you read the poem you get a sense, you get a sense of, you feel the images, you feel the images of the places where does the where where from where the river flows. It's creating images in your mind because the poet has used words in a fashion that creates images in your mind, images of the places that the river flows through, and that's called imagery of sight and etc. And here is exquisite words means शानदार अल्फाज में इसने इसको बयां किया है. सो अब हम पढ़ेंगे पहली लाइन से शुरू करते हैं. I come from haunts of coot and hern. तो मैं वहां से आती हूँ जहाँ रहते हैं कूट एंड हर्न. दीज आर दी फ्रेश वाटर बर्ड्स. ये आबी परिंदे हैं जो कि साफ पानी में रहते हैं. तो जाहिर सी बात है, ये जो छोटी सी नदी है, ये पहाड़ों से बहती हुई आती है और जहाँ का पानी बहुत साफ होता है. तो जहाँ पे ये पानी थोड़ा सा जमा हो जाता है, where does it accumulate a little bit, these and there is the habitat of coot and hern. and और इस hern को इंग्लिश में असल में हीरॉन कहते हैं, but the poet has used the word hern for whatever reason it may be, but it's actually हीरॉन. तो अब नदी का सफर जो है वो शुरू हो गया. कहाँ से? जहाँ रहते हैं कूट एंड हर्न. आई मेक ए सडन सैली. और जो ही ये पानी जो है जहाँ कूट एंड हर्न रहते हैं, वहाँ जाहिर सी बात है वहाँ पे ये थोड़ा सा रुक गया होता है. उसके बाद ये और उसके बाद ये जो है पोएट लिखता है, ये जो नदी है ये कहती है आई मेक अ सडन सैली. उसके बाद में अचानक से यू नो अचानक से उसके बाद उसके अचानक से मैं निकल पड़ती हूँ अपने सफ़र पे. आई मेक ए सडन सैली. और सैली का ये जो इसकी मीनिंग है उसका मैंने लिखा है यहाँ पे, टू रश, यानी एकदम से निकल पड़ना. एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न. और यहाँ पे जो है इस स्पार्कल का मतलब जो है टू शाइन ब्राइटली, चमकते हुए.
निकलती हूँ एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न। चमकते हुए निकलती है कहाँ से? फर्न से। फर्न जो है एक प्लांट है जिसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं। तो वो उसको कहीं कहीं पे छुपा देते हैं, इस नदी को कहीं कहीं पे छुपा देते हैं। और जब ये उनसे बाहर निकलती है तो ये चमकती हुई निकलती है, क्योंकि इस पे सूरज की जो रोशनी पड़ती है, इट इट शाइन्स, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। उसके बाद जो है and sparkle out among the fern when it comes out from the fern to bicker down to bicker down a valley। बिकर यहाँ पे जो है, बिकर का मतलब है, और ये आई हैव रिटन इट हियर, बिकर मीन्स मूव विथ पैटरिंग साउंड, पैटरिंग नॉइज। पैटरिंग नॉइज मीन जब कोई चीज किसी चीज से बार बार टकराती है, वहां से जो आवाज आती है उसको बोलते हैं पैटरिंग, पैटरिंग साउंड और पैटरिंग नॉइज। तो यहाँ पे जो नदी है ये बार बार टकराती है जमीन से, पत्थरों से, तो वहां से एक आवाज बनती है, उसी को कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है, उसी को बिकर कहा गया है। और टू बिकर डाउन अ वैली, और उसके बाद मैं शोर मचाती हुई इस वैली की, इस वादी की तरफ चल पड़ती हूँ। बाय 30 hills आई हरी डाउन। और यहाँ पे जो कहा गया है बाय 30 hills, it does not exactly mean 30, it may be, it may be, it means it comes down from many hills, बहुत सारे पहाड़ों को ये पार करते हुए ये जो है नदी चल आती है। It passes by many hills. That's what's written as by 30 hills. It does not. It's in exactly 30 hills. It means many hills it crosses on its journey. और स्लिप बिटवीन द रिजेस, और स्लिप बिटवीन द रिजेस, यहाँ पे जो रिजेस का मतलब है एंड ये लॉन्ग नैरो एज, ये जो पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर एक सतह होती है जो कि बहुत जो कि विच वेरी नैरो, जो कि बहुत तंग होती है। हाँ, तो और स्लिप बिटवीन द, इसने यहाँ पे वर्ड स्लिप का यूज इसलिए, इट हैज यूज्ड द वर्ड स्लिप इंस्टेड ऑफ फ्लो बिकॉज these the place between the narrow edges, for example this is one edge and this is the other edge, and this river flows between these edges, but these edges aren't that much steep than the mountains are, so that's why it says slip, because they aren't that much steep, and a kind of, it flows a kind of gently through these ridges. That's why it says slip, because the river flows a bit gently over there. By 20 tops a little town, and then when it crosses the hills, and then when it crosses the ridges, and then it comes to the tops. Tops means villages, and then it comes down to the villages. And here also it has been it's written by 20 tops, and it means many, it crosses and it comes through many villages and then through a town, because where there are many villages there is obviously a town, and it also comes through a town. And half a hundred bridges, and half a hundred bridges means 50 bridges, and also here the number, and then 50, actually the number that has been used by the poet, it means actually many bridges, obviously because क्योंकि ये बहुत सारे गाँव से आती है, एक एक ज़िले से आती है, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको आर पार जाना होता है, तो वहाँ पे जो है उनके लिए उन्होंने ब्रिजेस बनाए हैं, और ये उन ब्रिजेस के नीचे से बहती है। And half a hundred bridges, and these bridges have been built in the villages and the towns by the people for their ease, and it flows through these bridges, and it, till last by flips farm I flow। और आखिर पे ये कहाँ से, आखिर पे आती है ये फिलिप्स फार्म। यहाँ पे जो पोइट ने नाम यूज किया है फिलिप्स फार्म, फिलिप्स जो है ये एक मतलब अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजों में ये नाम मतलब पाया जाता है। So it's an English name because the poet is also English. So poet is from Britain, so he has used a British name. So
Till last by flips farm. Farm means where crops are grown. So it's very usual. हम कह सकते हैं कि खेत, फार्म हम कह सकते हैं खेत, जहाँ हम ये जो है कुछ उगाते हैं। तो आखिर में ये वहां से गुजरती हुई आती है। टू जॉइन द ब्रमिंग रिवर, और उसके बाद बड़े दरिया में, बड़े दरिया के साथ मिल जाती है ब्रमिंग। और जिसको कहा गया है ब्रमिंग रिवर। ब्रमिंग क्यों कहा जाया गया है? फुल टू द पॉइंट ऑफ ओवरफ्लोइंग, जो कि पानी से भरा हुआ होता है, उसमें ये जाके मिल जाती है। For men may come and men may go, but I go on forever. और यहाँ पे कहा गया है कि here the poet has said that for men may go and men may for men may come and men may go. Men are born and men die, but the river keeps on going forever. This means that man is mortal and this river is eternal. That nature is eternal and man is mortal. And this is what mean. And this is what the poet means in these two lines. And next we will see, and from this onwards we will see in the next video. Thank you.